डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 20 लेकर डॉक्टर मोहम्मद तजम्मुल एक दफ़ा फिर हाजिर है। आज के लेक्चर में हम ज़्यादातर सुपर मैश पर ही कंसंट्रेट करेंगे। इसमें कुछ सादा और कुछ पेचीदा किस्म की मिसालें ली जाएंगी। सुपर मैश में जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी बताया कि आपको बगौर मुताला करना होता है कि सर्किट में कहाँ पे आप सुपर मैश के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक सादा यानी कि बेसिक मैशेस का ताल्लुक है, उनको आप एज सच ही कंसिडर कर लेंगे, और अगर बेसिक मैश में कोई भी करंट सोर्स इस्तेमाल हो रहा हो तो उस मैश में से फ्लो होने वाले करंट को उस करंट सोर्स के बराबर कंसिडर किया जाएगा। ताहम अगर हमारे अस्यूम किए हुए करंट की डायरेक्शन सोर्स की डायरेक्शन से मुख्तलिफ हो तो हमें फिर माइनस साइन का सहारा लेना पड़ेगा, और अगर सोर्स करंट की डायरेक्शन और हमारे अस्यूम किए हुए करंट की डायरेक्शन एक ही हो तो फिर हम दोनों को ऐड अप कर देंगे। इसी तरीके से हमें यह भी बगौर देखना पड़ेगा कि अगर कोई ब्रांच किसी दो मैशेस के दरमियान शेयर हो रही हो तो उसमें से पास होने वाले करंट को हमने देखना होगा कि किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यानी कि अगर हम एक मैश की इक्वेशन लिख रहे हों तो उसकी नेबरिंग मैश के करंट को भी कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हम शेयरिंग ब्रांच में से नेट करंट को लिखने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, और इसमें भी हम करंट्स का साइन बिल्कुल उसी तरीके से लेंगे। अगर दोनों करंट्स अगेंस्ट ईच अदर फ्लो कर रहे हों तो फिर तो हम उनका डिफरेंस, और अगर दोनों करंट्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे तो फिर हम उनको ऐड अप कर देंगे। ये बुनियादी नुकात हैं जो आपको मैश एनालिसिस में बहुत ज्यादा मददगार होते हैं। इसके अलावा एक और नुक्ता जो आपको याद रखना चाहिए वो ये है कि जिस मैश की हम इक्वेशन लिख रहे होंगे उसका करंट जब हम किसी ब्रांच में से नेट करंट की वैल्यू को लिखने की कोशिश कर रहे होंगे तो जेरे गौर मैश का करंट पहले लिखेंगे और उसकी नेबरिंग मैश का करंट उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, यानी कि वो बाद में आएगा। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहली मिसाल एक मरतबा फिर निहायत सादा किस्म की कंसिडर की है, जो कि सुपर मैश की बेसिक मिसालों में से एक है। आइए स्लाइड पर रेजिस्टिव नेटवर्क को देखते हैं। द रेजिस्टिव नेटवर्क शोज it has been using one independent current source having a value of 2 milliamperes, whereas an independent voltage source has also been used into this network, and this independent voltage source is having a value of 12 volts. Now the resistive network has also been provided with two output terminals across which we are interested to work out the voltage, which is marked into the circuit in the form of V0. Now, starting to establish our circuit according to the mesh analysis, first of all, as usual, we have to assign various current values to different meshes. To do that, we consider mesh number 1, which is on to the left hand side of the circuit, as mesh 1, and also we consider that the current flowing through this mesh is I1 into the clockwise direction. Now, we can consider the mesh number 2 as a separate, but that will be a cumbersome job. Therefore, we combine the two meshes and create a super mesh consisting of the two meshes. And also we consider that the current I2
is flowing through the super mesh, and the direction of flow of this current is also into the clockwise direction. Now, if we consider the mesh number 1 first, we can write the current I1 very easily, because and the sharing branch is having an independent current source which is marked as having a current value of 2 milliamperes. Now once again, when we are writing, before we write the expression for this current I1, we can observe the direction of the two currents, which is I1, and the direction of the current which is being provided by the independent current source. And as we observe, we can see that the two currents, they are flowing in opposite direction as compared to each other. Therefore, we can write I1 is equal to minus 2 milliamperes. अब जबकि हमने मैश नंबर 1 के लिए करंट की वैल्यू को लिख लिया है, यानी कि इसमें कोई कैलकुलेशन दरकार नहीं थी, सादा सा ऑब्जर्वेशन का मेथड इस्तेमाल करते हुए हमने I1 की वैल्यू को माइनस 2 मिलीएम्पियर लिख लिया है. इसके बाद अब हम सुपर मैश को हल करने की कोशिश करेंगे, और जब हम सुपर मैश को हल करने की कोशिश करेंगे तो उसमें कर्कॉफ्स वोल्टेज लॉ का बहुत ज्यादा अमल दखल है. कर्कॉफ्स वोल्टेज लॉ को इस मैश पे हम अक्रॉस ईच एलिमेंट अप्लाई करते हुए जाएंगे, और उसमें ता वक्ते के हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएं, इक्वेशन को लिखते रहेंगे और फिर तमाम टर्म्स को बराबर 0 कर देंगे. इसमें एक मर्तबा फिर ख्याल रखना होगा कि किसी एलिमेंट में से, जो कि सर्किट एलिमेंट है, कहीं कोई करंट एक से ज्यादा नंबर ऑफ करंट्स तो फ्लो नहीं कर रहे. अगर ऐसा है तो हमें उनकी डायरेक्शन का नोटिस लेना होगा. आइए कर्कॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए एक मर्तबा फिर स्लाइड पर चलते हैं. अप्लाइंग Kirchhoff's voltage law for the super mesh, we can write the equation. I will start from the top left corner of the super mesh. Therefore, the first circuit element, which is a resistance of having 2 kilo ohm value. Now, as we move from there, we encounter the first resistance, which is having a 2 kilo ohm value. As we observe in the circuit, for the currents which are passing through this 2 kilo ohm value, we can see that there are two currents which are flowing through this 2 kilo ohm value. These currents are I1 and I2. Therefore, we can write, as these two currents are in the same direction, therefore we can write I1 plus I2. Hence, we write 2K into I2 plus I1. Doesn't matter if you write I1 plus I2 or I2 plus I1. This is the third term into this equation. Now, as we pass through this resistive element, we reach at the 4 kilo ohm resistance. And we can see clearly that there is only one current which is passing through the 4 kilo ohm value, and that current is marked as current I2. Therefore, we can write plus 4K I2. We go through this circuit element as well, and we reach at the second 2 kilo ohm value resistance, which is attached into the circuit in the vertical manner. Therefore, also we observe that the current I2 is passing through this element as well. Hence, we can write 2K I2. As we move further around the super mesh, we reach at the 12 volt independent voltage source. And as we reach there, we can see that the negative terminal of the 12 volt voltage source is towards us. Therefore, either we can write minus 12 and equate all these terms
to 0, or we can write all these terms equals 12. Hence we have written all these terms equal 12. Further simplifying it, we can write 6k I2 plus 2k I2 plus 2k I1 is equal to 12. Furthermore, simplifying gives 8k I2 minus 4 is equal to 12. And this equation we have obtained after putting the value of the I1 into the above equation. Therefore, we can reach at 8k I2 is equal to 16. And doing simple mathematics, we can write I2 equals to 2 milliamperes. अजीज तलबा, अब जबकि हमने करंट I2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है और जैसा कि हमने अभी देखा कि ये करंट I2 सुपर मैश में से फ्लो कर रहा है, लिहाजा हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि V0 जो कि इस सर्किट के लिए आउटपुट वोल्टेज है उसको कैलकुलेट कर सकें। अगर सर्किट का आप बगौर मुतालिया करें तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी डिजायर्ड वोल्टेज यानी कि V0 है वो एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैलकुलेट की गई है। लिहाजा हम ये भी देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 2 किलो ओम है वो सुपर मैश का हिस्सा है और हमारे प्रीवियस नॉलेज के मुताबिक क्योंकि सुपर मैश में से करंट I2 फ्लो कर रहा है, इसलिए इस 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस में से भी करंट I2 ही फ्लो कर रहा होगा। इस नॉलेज के इस्तेमाल से हम इस रेजिस्टेंस पर ओम्स लॉ को अप्लाई करते हुए V0 को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए ओम्स लॉ अप्लाई करते हुए V0 की वैल्यू को स्लाइड पर कैलकुलेट करते हैं। Therefore, we can write V0 is equal to 2k into I2. And because we have already calculated the value of I2 as 2 milliamperes, therefore, we replace I2 by 2 milli. Hence, we can write V0 is equal to 2k into 2 milli. Now, from our basic knowledge of the SI system, we know that the kilo factor is 10 raised to the power 3, whereas the milli factor is 10 raised to the power minus 3. Hence, they will cancel out each other and we are left with 2 into 2, that will be equal to 4. Therefore, V0 is equal to 4 volts. इससे अगली मिसाल में हम एक रेजिस्टिव नेटवर्क जो लेने जा रहे हैं वो 4 मैशेस पर मुश्तमिल होगा, जबकि इसमें 2 इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज और एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल किया गया है। इस सर्किट में जब हम मुख्तलिफ मैशेस को जो कि हमारी बेसिक मैशेस होंगी उनको डिफाइन कर लेंगे तो लामहौला हमें एक सुपर मैश भी डिफाइन करना पड़ेगी। इस सर्किट में यह एक खासियत होगी कि अब तक जितनी भी हमने सुपर मैशेस डिफाइन की हैं वो ज्यादा से ज्यादा 2 बेसिक मैशेस पर मुश्तमिल थीं, जबकि इस सर्किट में ये सुपर मैश 3 बेसिक मैशेस पर मुश्तमिल होगी। हमने इस सर्किट को डेलिबरेटली आपके लिए डाला है ताकि आपको इस एस्पेक्ट से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आइए इस सर्किट को देखने के लिए स्लाइड पर चलते हैं। सर्किट शोज अ रेजिस्टिव नेटवर्क यूजिंग 2 independent current sources. One of this independent current source is having a value of 1 milliampere, whereas the other one is having a value of 3 milliamperes. The network is also
using an independent voltage source which is having a value of 6 volts. Now, clearly we can see that the circuit consists of 4 basic meshes, and we have to calculate the voltage V0, which is across the resistance having a value of 4 kilo ohms, and that is at the output terminals of this circuit. Now, according to our usual practice, first of all, we can define the various current values to the various meshes. As we take up this circuit, first of all, we assign the current I1 to the so-called mesh number 1, which is having a current source of 3 milliamperes. And also we have defined the current I1 into the clockwise direction. Similarly, we can go across the mesh number 1 and assign the current I2 to the mesh number 2, which is across the mesh number 1. And now we have to consider about the supermesh area. To declare the supermesh, we have to see that a current source is being shared between the two meshes. Therefore, we can also include the one mesh which is at the top right of the circuit as the part of a supermesh, and we declare that the current I3 is passing through this mesh. Now, as we take up the mesh number 1, which is having current I1 flowing through it, we can write clearly I1 is equal to 3 milliamperes, because the direction of the current I1 and the direction of the current which is being provided to this loop by the independent current source are same. Hence, we have a positive value for the current I1. Similarly, if we see the current I2 which is flowing through the mesh number 2, we also observe that the current I2 and the direction of the current which is being provided to this mesh by the independent current source are same. Hence, we also can write the positive value for the I2, and because the value assigned to this independent current source is 1 milliampere, therefore, we can write I2 is equal to plus 1 milliampere. अब जबकि हमने I1 और I2 की वैल्यूज डायरेक्टली फ्रॉम द रेजिस्टिव नेटवर्क से लिख ली हैं, लिहाजा हमारे लिए तीसरा मरहला जो कि I3 की वैल्यू को कैलकुलेट करने से मुतल्लिक है वो आ गया है. इसके लिए हमें मैश नंबर 3 यानी कि जो हमने सुपर मैश डिक्लेयर की है उसके ऊपर KVL को अप्लाई करते हुए इक्वेशन लिखना होगी, और फिर I1 और I2 की वैल्यूज को उसमें पुट अप करते हुए हम I3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे. KVL इक्वेशन फॉर द सुपर मैश लिखने के लिए आइए एक मर्तबा फिर स्लाइड पर चलते हैं. Applying KVL equation for the mesh number 3 or the loop 3, we can write 4K I3 plus 2K I3 plus I2. I have started from the 4 kilo ohm resistance which is at the top right of the circuit and across which we have to calculate the voltage V0. As we pass through that, we encounter the 2 kilo ohm value resistor, and in here we can observe that there are two currents which are flowing through the 2 kilo ohm value, and these currents are I3 and I2. Also we can see that the two currents, they are flowing into the same direction. Hence we can write 2K into I3 plus I2. As we write this term, we further pass on
to the minus 6 volt independent voltage source. Therefore, we can write 6 at the other side of the equation. As we pass through the independent voltage source, we encounter the 4 kilo ohm resistance, which is being shared between the super mesh and the mesh number 1. Once again, we have to observe the direction of flow of the currents through this 4 kilo ohm value. And we can see clearly that there are two currents which are flowing through this 4 kilo ohm value. One of these currents is I3, whereas the second current is I1. And now, because they are flowing into the opposite direction, therefore, we decide that we have to write the difference of these two currents for the net current flow through this resistance. And also, because at present we are concentrating onto the super mesh through which the current I3 is flowing, therefore, we will write I3 first and subtract the current I1 from it. Therefore, we can write plus 4K I3 minus I1. As we pass through this 4 kilo ohm resistance, after writing its term, we reach at the 2 kilo ohm value. Now, for this 2 kilo ohm value, once again, we can observe that there are two currents which are flowing through this resistance. Now, once again, the same methodology will be applied to write the net current flowing through this 2 kilo ohm value. And because the current I3 and the current I1 are flowing through this resistance, and also they are flowing in the opposite direction to each other, therefore, we will write I3 minus I1. Once again, you may notice that we have written I3 first because we are concentrating onto the super mesh, and for which we have declared that current I3 is passing through it. Hence, simplifying this equation, we can write 4K I3 plus 2K I3 plus 2K I2 plus 4K I3 minus 4K I1 plus 2K I3 minus 2K I1 is equal to 6. Further simplifying it and putting the values of I1 and I2 into this equation, we can write 12K I3 plus 2 minus 12 minus 6 equals 6. Further simplifying using simple mathematics, we can write 12K I3 equals to 22. Or simply we can calculate I3 having a value of 1.833 milliamperes. अब जबकि हमने I3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, लिहाजा हम वंस अगेन इस पोजीशन में आ गए हैं कि ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए V0 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। एक मर्तबा फिर हम सर्किट पर देख सकते हैं कि क्योंकि V0 की वैल्यू जो कि हमें मतलूब है वो अक्रॉस 4 किलो ओम रेजिस्टेंस के कैलकुलेट करना है, और ये 4 किलो ओम रेजिस्टेंस सुपर मैश का मेंबर है। और ये भी हम जानते हैं कि सुपर मैश में से फ्लो होने वाले करंट को हमने I3 का नाम दिया है और I3 की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया है। लिहाजा ओम्स लॉ को अप्लाई करते हुए V0 की वैल्यू को इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा जैसा इस स्लाइड में दिखाया गया है। Therefore, we can write V0 is equal to 4K I3. Now, putting the value of
I3 from the previous slide, we can write V naught is equal to 4K into 1.833 milliamperes. Simplifying it, that is cancelling the kilo factor with the milli factor and multiplying 4 with 1.833, we can write the value for V naught as 7.33 volts. इससे अगली मिसाल में जो सर्किट एनालिसिस के लिए कंसिडर किया जा रहा है, उस सर्किट में भी 4 लूप्स यानी कि बेसिक मैशेस हैं, लेकिन इसमें जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज का इस्तेमाल हुआ है, उसके अलावा इस सर्किट की खसूसियत ये है कि इसमें जब हम सुपर मैश को डिक्लेयर करेंगे तो ये सुपर मैश ऑल द 4 मैशेस पर मुश्तमिल होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो गया है, लेकिन घबराएं नहीं, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये निहायत आसान लगेगा। आइए इस सर्किट को स्लाइड पर देखते हैं। द सर्किट शोज a resistive network which is using 2 independent current sources. One of these is having a value of 1 milliampere, whereas the other one is having a value of 2 milliamperes. Also, the circuit has used an independent voltage source which is having a value of 6 volts. And we want to calculate the current I naught, which is through the 2 kilo ohm resistance. Now, as our usual practice, we will assign various current directions and values which are unknown to us for various meshes. If I consider the top left-hand mesh as mesh number 1 and assign the current I1 flowing through it into the clockwise direction, then I can draw the current in which way it will be flowing through the mesh number 1 as shown in this slide. Next to that, I assign the mesh as mesh number 2, and similarly we assign the current I2 flowing through this mesh as well, and this current is flowing into the clockwise direction too. Underneath the mesh number 2, we declare there exists a mesh number 3, and also we declare that the current I3 is flowing through the mesh number 3 into the clockwise direction. Now, because if we consider the resting mesh, which is, you can say, we haven't declared it yet as mesh number 4, if we declare it as a sub-mesh, then it won't be of any good use. Rather, the circuit may become complicated because no voltages across the current sources are known to us. Hence, the solution is to declare the super mesh. In this case, we have to declare the super mesh which will be rounding around all the 4 meshes. And then we will write the KVL equation for this rounding super mesh so that we can calculate our desired value of I naught. एक मरतबा फिर हम तमाम बेसिक मैशेस का बगौर मुताला करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी मैशेस में से फ्लो होने वाले करंट को हम बासानी डायरेक्ट तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम मैश नंबर 1 लेते हैं। फॉर मैश नंबर 1 we can see that the current which we have assumed is the current I1, and there exists an independent current source having a value of 2 milliamperes, which is the member of this mesh as well. Although the direction of the 2 milliampere current source and
the direction of the current I1 are opposite to each other. Therefore, very safely we can write I1 is equal to minus 2 milliamperes. For the mesh number 2, because there is no current source involved into it, therefore we have to restrict ourselves to do any expedition. Rather, we will move to the mesh number 3 and we can write the value for the current I3 which is flowing through the mesh number 3, and that is equal to 1 milliampere, because the current source which is a part of this mesh number 3 has already been given the value of 1 milliampere. And also the two currents, that is the current I3 and the current which is being provided by the independent current source, are flowing into the same direction through this mesh. Therefore, we have taken the sign for I3 as positive. अब जबकि हमने I1 और I3 की वैल्यूज को बराह रास्त लिख लिया है, तो आप भी हैरान हो रहे होंगे कि अब तक हमने I2 की वैल्यू को क्यों नहीं छेड़ा। उसके लिए रीजनिंग ये है कि क्योंकि मैश नंबर 2 में कोई भी करंट सोर्स इन्वॉल्व नहीं हो रही है, लिहाजा हमारे लिए ये जरूरी हो गया है कि हम मैश नंबर 2 पर केवीएल अप्लाई करते हुए उसकी लूप इक्वेशन लिखें। आइए मैश नंबर 2 की केवीएल इक्वेशन लिखने के लिए एक मर्तबा फिर स्लाइड पर चलते हैं। नाउ द केवीएल इक्वेशन फॉर द मैश नंबर 2 कैन बी रिटन एज, starting from the 4 kilo ohm resistance which is connected into this loop in the vertical position, we can write 4K into I2 plus I4. Now we have written I2 plus I4 as the net current flowing through this 4 kilo ohm value due to the reason that we can observe I2 and I4, both currents are flowing through 4 kilo ohm resistance and they are flowing in the same direction. Hence, we have to do the sum of these two currents. As we write this term, we pass on to the next resistance which is having a value of 2 kilo ohms and is connected into this mesh horizontally. As we reach there, first of all, we write the value of the resistance, and next to that, we start observing the direction of the currents flowing through this resistance. And we can observe that there are two currents which are flowing through 2 kilo ohm resistance. One of these currents is the current I2 and the other one is the current I3. However, both these currents are flowing in opposite direction as compared to each other. Therefore, we have written 2K into I2 minus I3. एक मर्तबा फिर आप ये गौर कर सकते हैं कि इस टर्म को लिखते वक्त हमने पहले I2 और उसके बाद I3 को लिखा है। इसकी बुनियादी वजह फिर वही मैं एक मर्तबा फिर दोहरा रहा हूं कि क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन मैश नंबर 2 पर है, लिहाजा हम उसमें से पास होने वाले करंट को पहले लिखेंगे और दूसरा करंट जो कि नेबरिंग मैश की वजह से इस रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है, उसको हम बाद में लिखते हैं। आइए फर्दर टर्म्स लिखने के लिए एक मर्तबा फिर स्लाइड पर चलते हैं। As we pass through this 2 kilo ohm resistance which is connected into the mesh horizontally, we reach at another 2 kilo ohm value which is connected into this mesh vertically. Therefore, first of all, we will write plus 2K, which is the value of this resistance. Next step is to write the net current which will be passing through this resistance. And we can also observe from the circuit that the current I2
and the current I1 are flowing through this resistance. And also, we can observe that these two currents, while they are passing through this 2 kilo ohm resistance, are in opposite direction as compared to each other. Therefore, we can write I2 minus I1 and equate all these terms to 0. Simplifying this expression, we can write 8k I2 plus 4k I4 minus 2 plus 4 equals 0. We have reached to this equation after putting up the values of I1 and I3 into the equation. Further simplifying it, we can write 4k I2 plus 2k I4 is equal to minus 1. अजीज तलबा, यहाँ तक आप देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन एक है जबकि दो अननोन वेरिएबल्स यानी कि I2 और I4 हैं. लिहाजा हमारे लिए एक इक्वेशन में से दो अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज को अखज करना नामुमकिन है. इसके लिए अब हमें लाजमी तौर पर सुपर मैश की इक्वेशन भी लिखना पड़ेगी और फिर इन दो इक्वेशंस को हम सिमल्टेनियसली हल करेंगे ताकि हमें किसी एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू मुयस्सर आ जाए और फिर उस वैल्यू को हम किसी एक केवीएल इक्वेशन में पुटअप करके दूसरे अननोन वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. आइए सुपर मैश की इक्वेशन केवीएल को इस्तेमाल करते हुए लिखने के लिए स्लाइड पर चलते हैं. नाउ फॉर द लूप नंबर 4, which is also the super loop or super mesh, we can write starting from the 4 kilo ohm value once again, we write 4k into I4 plus I2. And once again, as we have just done in the last slide, that the two currents which are passing through the 4 kilo ohm value are I2 and I4, and because they both are passing into the same direction, therefore we have to write the sum of the two currents. After writing this term, we reach at the 2 kilo ohm value, which is the part of the mesh number 3. First of all, we will write plus 2k, which is the value of the resistance for which we are going to write the term. And we also observe that there are also two currents which are flowing through this resistance. And these two currents are I3 and I4. However, in this case as well, we can see that the two currents are flowing into the same direction. Therefore, we have written I4 plus I3. As we write this term complete and we pass through this 2 kilo ohm resistance, we reach at the 6 kilo ohm resistance, which is at the far left corner of the circuit. Through this resistance, we can see that there is only one current, I4, which is flowing. Therefore, very simple, we can write 6k I4. As we complete this term, we reach at the independent voltage source, and also we can see that the negative terminal of this independent voltage source is towards us. Therefore, we can write minus 6. And as we pass through this element after writing the term, we can see that we have arrived at our starting point. Therefore, we equate all these terms to 0. Now, simplifying this equation, we can write 12k I4 plus 4k I2 plus 2 minus 6 equals 0. Actually, we have
put up the values for I3 into this equation. Further simplifying it, we can write 12k I4 plus 4k I2 minus 4 equals 0. Therefore, we also can write 3k I4 plus 1k I2 is equal to 1. अब जबकि हमने सुपर मैश और मैश नंबर 2 की इक्वेशंस को लिख लिया है और हमने देखा कि सुपर मैश में भी दो अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, इसी तरह से मैश नंबर 2 की जो इक्वेशन हमने लिखी उसमें भी दो अननोन वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे। लिहाजा इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके पहले तो इन अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से आई नॉट जो कि एक रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। आइए इनकी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए एक मरतबा फिर स्लाइड पर चलते हैं। मल्टीप्लाइंग equation of loop 2 by 3 and equation of loop 4 by 2 and subtracting these two equations, we can write 12k I2 plus 6k I4 is equal to minus 3 minus 2k I2 minus 6k I4 is equal to minus 2. Therefore, we can see that we have cancelled out after subtracting the term I4 along with its coefficient. Hence, we can write 10k I2 is equal to minus 5. From this equation, we can work out the value of I2, which will be equal to minus 0.5 milliamperes. Now, we are in a position to calculate the value of I naught. इससे पहले कि हम I naught की वैल्यू को कैलकुलेट करें, एक मरतबा फिर आपकी याद दहानी के लिए ये बताता चलूं कि हमें बगौर मैश नंबर 1, क्योंकि I naught जो हमसे डिमांड की गई है वो मैश नंबर 1 में दिखाई गई है, लिहाजा हमें मैश नंबर 1 का बगौर जायजा लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि I naught जो एक रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रही है उस रेजिस्टेंस में से I1 के अलावा और कौन सी करंट फ्लो कर रही है। अगर ऐसा है तो फिर हम उसमें से नेट करंट को लिखने की कोशिश करेंगे और अगर एक ही करंट फ्लो कर रही हो तो फिर जाहिर है कि हमें कोई भी नेट करंट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक करंट की वैल्यू को हम लिख देंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू I naught. तो आइए हम देखते हैं कि 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस जिसमें से फ्लो होने वाले करंट को I naught से ताबीर किया गया है और हमें कैलकुलेट करना है, और ये भी देख सकते हैं कि ये 2 किलो ओम रेजिस्टेंस ये एक शेयरिंग रेजिस्टेंस है बिटवीन द मैश नंबर 1 और मैश नंबर 2, लिहाजा लामहल्ला तौर पर इसमें से दो करंट्स फ्लो कर रहे होंगे। आइए स्लाइड पर देखते हैं कि इन दो करंट्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से नेट करंट को लिखा जाएगा। तरीका इसका वही है जो हम अभी तक लूप इक्वेशन वगैरह लिखते हुए इस्तेमाल करते आए हैं, घबराइए नहीं, निहायत सादा है। आइए स्लाइड पर चलते हैं। Therefore, we can write I naught is equal to I1 minus I2. We have written the difference of the two currents due to the reason that you can also observe that current I1 and I2 are flowing through 2 kilo ohm resistance in opposite direction. Therefore, putting the values of I1 and I2 into this equation, we can write I naught is equal to minus 2 plus 0.5. Therefore, we can reach at the I naught value having a figure minus 1.5 milliamperes. अगली मिसाल में हम जो सर्किट लेने जा रहे हैं उसमें
एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा उसमें एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का इस्तेमाल भी किया गया है। तकनीक वही यानी कि सुपर मैश टेक्निक को अप्लाई करते हुए इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे या फिर एनालिसिस करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि मुख्तलिफ करंट्स और फिर वोल्टेज जो कि वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स को डिफाइन करने के लिए पूछी गई है उसकी वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होगी। इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है वो अब तक इस्तेमाल होने वाली टेक्निक से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, यानी कि इसमें हम सुपर मैश को तो डिक्लेयर करते हैं, लेकिन जिस तरह से अब तक हम आउटर लूप में एक बहुत बड़ी लूप को कंसिडर करते थे, इस मिसाल में वो इस्तेमाल नहीं होगी। घबराइए नहीं, ये अल्टरनेटिव मेथड है। इस मिसाल को बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हमने बाकी मिसालें हल की हैं भी हल किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए और नॉलेज के लिए इसमें इंक्लूड की गई है ताकि आपको मालूम हो कि सुपर मैश तकनीक को हल करने का एक ये भी तरीका है। यानी इस सर्किट में हम कपलिंग इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह से हम नोड एनालिसिस जो कि सुपर नोड कॉन्सेप्ट था उसमें कपलिंग इक्वेशन लिखते आए हैं। आइए इस सर्किट को देखने के लिए स्लाइड पर चलते हैं। द सर्किट शोज दैट देयर आर 3 meshes which we define that these are basic meshes into the circuit. Also, a voltage dependent current source which is having a value of 2V sub x is used into this circuit, along with an independent voltage source which is having a value of 1 volt is used into this circuit. We define the current directions for the mesh number 1, mesh number 2 and 3. Respectively, we can write the currents for mesh number 1, the current will be I1. For mesh number 2, the current is I2. And for mesh number 3, the current is I3. Also, we have considered that these currents are flowing into the clockwise direction. Now, starting from mesh number 1, we can write the equation for mesh number 1 as 4I1 minus 4I2 plus 1 equals 0. Once again, you can observe that we have written minus in between the two currents. That is due to the reason that the 4 ohm branch is being shared between the mesh number 2 and the mesh number 1. And because we are concentrating upon the mesh number 1, therefore, we have written I1 first and subtracted I2 from it. For the super mesh, which is comprising the meshes 2 and 3, we can also write the current equation as 3I2 plus 2I3 plus 4I2 minus 4I1 equals 0. Also, we can see that the voltage dependent current source which is lying in between the two meshes, that is mesh number 2 and the mesh number 3, can also have an equation. Therefore, the coupling equation for the voltage dependent current source can be written as I3 minus I2 is equal to 2Vx. Also, if we look into the mesh number 2, we can observe that Vx is equal to 3I2. We solve these equations for I1. We can have 4I1 minus 4I2 is equal to minus 1. And for I2, we can write minus 4I1 plus 7I2 plus 2I3 equals 0.
For mesh number 3, we can write minus 7I2 plus I3 equals 0. Therefore, solving these three equations simultaneously, we can have I1 is equal to minus 308.8 milliamperes, I2 is equal to minus 58.82 milliamperes, and I3 is equal to minus 411.8 milliamperes. अजीज तलबा, आज के लेक्चर में हमने सुपर मैश के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एलैबोरेट किया और उसमें देखा कि दो बेसिक मैशेस को लेकर किस तरह से सुपर मैश को क्रिएट किया जाता है और ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसी तरीके से हमने ये भी देखा कि ऐसे सर्किट्स जिनमें 3 बेसिक मैशेस या फिर 4 बेसिक मैशेस मिलकर एक सुपर मैश बनाती हैं, उनका सॉल्यूशन किस तरीके से हासिल किया जा सकता है। अगले लेक्चर में भी हम सुपर मैश और फिर इससे आगे थोड़ा सा शायद अगर टाइम अवेलेबल हुआ तो क्रैमर्स रूल को देखेंगे। आज के लेक्चर का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।